Welcome again, my dear students. In this video, we will continue chapter Sole Trader. Earlier videos, I was discussed about meaning, characteristics, and objective of sole trader. Now, we will going to start merits and demerits of sole proprietor. Okay, so let's start merits of sole proprietor. Okay, first merit: a sole trader, a sole proprietorship can be set up easily and quickly. No legal formalities and expenditure are involved in the establishment of a proprietorship. The proprietor can select the business of his choice without taking permission from anyone. There is no need to associate others or to enter any agreement. Registration of the firm is not required, and there is no loss of time. Only license may be needed in special cases, that is to set up a wine shop. The proprietor can start business operation as and when he desires. Why sole proprietor's business easy formations? So, because no legal formality is required, or yes, and no permission is required. Okay, sole proprietor from any for selection his business, these are no need registration, no need of registrations. In sole propriety, only license will be needed in special cases, that is wine shop, gun houses, etc. Okay, so sole proprietors is very easy formation. This is advanced first. Okay, now second, motivation to work. The proprietors alone is entitled to receive all the profit of business, and he alone has to bear all risk. Yes, there is direct relationship between efforts and rewards. Means more efforts, more reward. Less effort, less reward. Direct relationship. Because only sole proprietor, only one man, वही वो उसका प्रॉफिट और लॉस जो बियर कर रहा है, सब कुछ वही बियर कर रहा है. ठीक है. सो मोटिवेशन टू वर्क means a sole proprietor's all rewards and losses bear himself. So relationship between efforts and reward is direct. More effort, more reward. Less effort, less reward. Okay, so the sole proprietor is motivated to more efforts. जितना ज़्यादा एफर्ट करेगा उतना ज़्यादा उसको रिवार्ड मिलेगा. सो इसलिए मोटिवेट होता रहता है. ओके, जनरेट होता रहता है. सो बिकॉज ही वांट्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. बिकॉज ही वांट टू मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहता है. सो वो मोटिवेट होता रहता है ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने के लिए. ओके, now quick decision. Third one is quick decision. The sole proprietor is completely free to take decision and implemented them. He need not consult other or seeks their approval. Quick decision and prompt action help to improve efficiency of business operations. The proprietor can take on the spot decision, will therefore not let to opportunity slip away. So proprietors take decision, yes, and so quickly, because he is not bound to permission or consultations anyone. Okay, he make decision himself because he is own
of owner of his business. After making decision, he implemented decision immediately. Yes, immediate decision लेगा, एक्शन तुरंत लेगा, तुरंत उसको अप्लीकेबल कराएगा. ठीक है, उसको किसी से नीड ज़रूरत नहीं परमिशन की या किसी से कंजल्टेशन की. ओके, इसलिए डिसीजन उसके क्विक होगा. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट कंट्रोल. फोर्थ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट. फोर्थ मेरिट इज इंडिपेंडेंट कंट्रोल. Independent control. Just a minute, my dear students. Okay, independent control. The sole proprietor is the supreme judge of all matters pertaining to his business. He enjoys complete freedom of actions. He has absolute control of his business and nobody can interfere in his work. He exercises control over all functions, yes, of business. Authority and responsibilities are vested in the same person's supervision helps to improve efficiency of business. Sole proprietor can function smoothly because there is no one to oppose his decision. So, sole proprietor is the supreme judge of all matters pertaining to his business. Means none one can interference in his business. He is owner, manager of the business. So, absolute control of his business in his hand. There are no other person to consult and permission for any decision. Therefore, owner control is independent. Owner's control is independent. No one can control. Yes. Okay. Next point. Fifth point, that is secrecy of affairs. The sole trader is not required to publish his account. He is not expected to share his secret with others. Complete secrecy of business affairs provide him greater competitive strength. So, in sole traders, sole proprietor not need to publish books of accounts in newspaper, on Google or anywhere. There is none one others that knows his financial position and business strategies. Only sole proprietor knows these things. So we can say in sole proprietors maintains complete secrecy. Okay. Now next point is personal touch. The sole proprietor can maintain personal contact with his customer and employees. He can cater and to the requirement of each and every customer. He can also build healthy relation with his employees. So, sole proprietor maintain personal contact with his customer because supply and goods and services to ultimate sole proprietor supplies goods and services to ultimate consumer. He knows very well that need of customer and employees. So he provides goods and services as per the requirements of the customer and he maintain healthy relation with customer and employees. Okay. Now flexibility of operations. A sole trader business is usually a small in size and simple in structure. It can therefore be adjusted easily whenever necessary. The proprietor can easily expand and reduce his business operation of suit changing conditions in the market. He can
also change the modified his line business whenever necessary. So it means it is very easy to change as per the requirement of the business in sole proprietor, because sole proprietorship not required to many formalities as in the case of other forms of business like partnership and companies. In partnership and companies बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं अगर हमें बिजनेस का स्ट्रक्चर इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी, ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नॉट रिक्वायर एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज economy. Next point is economy. The proprietor is the owner, manager and controller of business. He does not appoint specialists for various functions. Therefore the management of the proprietorship is inexpensive. So mean there is not need to appoint a specialist for the various functions. The sole proprietor doing these things from himself. So the management of the sole proprietorship is inexpensive. Yes. Okay. Now the next point is minimum government regulations. Sole proprietorship business is free from government regulations. There is no government interference in the day-to-day functioning of business. No legal formalities are involved in the working of the sole proprietorship except tax laws and labor laws. टैक्स लॉ और लेबर लॉज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदर रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये दो लॉज हैं जो आपको हर टाइप का बिजनेस में फॉलो करने ही करने हैं, ये आपका एप्लीकेबल होने ही होने हैं। ओके, thus the sole trader is subject to the minimum legal formalities and government restrictions. Okay, so in case of sole proprietor, government interference is minimum, no formalities are required, no registrations, no permissions required by the government. This is very big advantage for the sole proprietor. Okay, now next one is easy resolution. It is very simple and convenient to dissolve a sole proprietorship. No specific legal formalities or regulations are involved in dissolution. So like कंपनी अगर डिज़ॉल्व करनी होती है तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, बट हेयर इन सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। ओनर्स जब चाहेगा, सोल प्रोप्राइटर जब चाहेगा क्लोज कर सकता है, कोई उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ नहीं फॉलो करनी पड़ती। ओके, एंड लास्ट वन इज दैट इज सोशल यूटिलिटी. Sole proprietorship provides an opportunity for gainful self-employment to persons with limited money. It offers a way of earning an honorable living to those who do not want to work under others. It also facilitates equitable distribution of income and wealth. It leads to development of personal equalities such as self-reliance, initiative, responsibility. Sole proprietorship provides equal opportunities to everyone to use his resources and talent to the maximum advantage. It leads to diffusion of ownership. So, sole proprietorship provides opportunity for employment with limited money. आपके पास कम मनी है फिर भी स्टार्ट कर सकते हो. दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज वेरी यूजफुल फॉर दोज हु डू नॉट वांट टू वर्क अंडर अदर्स. दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ सोसाइटी क्या होता है, रिड्यूस होता है. ओके, तो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर सोसाइटी. ओके, नाउ मूव ऑन
demerits of sole proprietorship. Okay, first, limited capital structure. The financial resources of a sole trader are limited. He has limited funds and his borrowing capacity is limited. ओनर्स देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर में या तो ओन फंड होगा या लोन फंड होगा। सोल प्रोप्राइटर्स है, उसके पास खुद का भी पैसा लिमिटेड ही होगा क्योंकि सिंगल पर्सन है, एक बंदे के पास लिमिटेड पैसा होगा और उसकी कैपेसिटी, बारोइंग कैपेसिटी मतलब बैंक भी उसको लिमिटेड पैसा देगा, ठीक है, उसकी असेट्स के बेसिस पे। सो यहाँ पर लिमिटेड है, इसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, लिमिटेड है। हिज बार्गेनिंग पोजीशन इज वीक। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में ओन फंड या लोन फंड, दो फंड होते हैं, तो इसके सोल प्रोप्राइटरी में दोनों भी उसके पास लिमिटेड होंगे। ओन फंड भी सिंगल पर्सन है, लिमिटेड होगा, लोन फंड भी बैंक जो है लिमिटेड प्रोवाइड करेगा। सो इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। ओके, स्मॉल स्केल बिजनेस में तो ठीक है, बट लार्ज स्केल में नॉट सुइटेबल। ओके, सेकेंड वन इज लिमिटेड मार्जिनल मैनेजरियल एबिलिटी। Limited managerial ability means one person cannot expert in the each and every function of the business. Yes, all the qualities required for success in the business are rarely found in one individual. The proprietorship may not be able to denote sufficient time of all the activities. He may commit errors of judgment of his decision may unbalance. The organization ability and managerial skill of sole proprietors are limited. In the absence of expert, division of labor is not possible. Listen my dear, एक सिंगल पर्सन हर एक सेक्टर में एक्सपर्ट हो, ये बहुत रेयर चांस है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। और इसमें हर एक सोल प्रोप्राइटरी में हर एक काम सिंगल पर्सन करता है, ठीक है, देन एक्सपर्ट नहीं हो सकता। हर एक बंदा सोल प्रोप्राइटर हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैनेजरल जो एबिलिटी है उसकी वो लिमिटेड है। ओके, नेक्स्ट वन, अनलिमिटेड लायबिलिटी। यस, द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल दोज लॉसेस बिजनेस फियर लॉस ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी ड्यू टू फेलियर ऑफ हिज बिजनेस। इसको जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सपोज प्रोप्राइटर्स ने बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस ने स्टार्ट करने के लिए फ्रॉम HDFC बैंक ही बारो ₹5 लाख। ओके, प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट की, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में लॉस आ गया और बिजनेस अल्टीमेट हो गया बंद, क्लोज हो गया, ठीक, नहीं सर्वाइव कर पाया, मार्केट नहीं थी उसके पास, एक्सेल्स नहीं थी उसके पास, एक्सपर्ट नहीं था वो, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब उसकी जो प्रॉपर्टी सेल की गई, जो बिजनेस में लगाया था, वो सब सेल करने से जो प्रोसीड्स मिला हमें ₹3 लाख, तो ₹2 लाख लोन अमाउंट का प्लस इंटरेस्ट पर्सनल लायबल होगा सोल प्रोप्राइटर, वो अपनी पर्सनल असेट्स डिस्पोज करके उसको पेड ऑफ करेगा। ओके, नाउ अनसर्टेन लाइफ। नेक्स्ट वन इज अनसर्टेन लाइफ। Sole proprietorship does not enjoy continuity of existence. It is dependent on the life of the proprietor. Business may come to a standstill due to the illness, insolvency and death of the proprietor. His successor may not capable enough to carry on business successfully. The owner and his business are inseparable as business has no separate legal status. सो अनसर्टेन लाइफ, इस सोल प्रोप्राइटरी की लाइफ उसके प्रोप्राइटर से जो है जुड़ी होती है। प्रोप्राइटर्स जब तक वो प्रोप्राइटर है तब तक बिजनेस है, ज़रूरी नहीं उसका हायर, लीगल हायर, उसका मान लो प्रोप्राइटर का डेथ हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है या इल हो जाता है, देन नॉट नेसेसरी कि उसका जो हायर होगा, लीगल हायर, वो कैपेबल हो उस बिजनेस को रन करा पाने में, तो उसको क्लोज हो जाएगा। यस, लास्ट पॉइंट इज दैट इज लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन ड्यू टू लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल भी लिमिटेड है, मैनेजरियल भी लिमिटेड है, बिकॉज सिंगल पर्सन हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता। देयर इज लिटिल स्कोप ऑफ एक्सपेंशन
and growth in sole proprietorship. In the absence of large scale operation, it cannot take advantage of economies of scale. So, sole proprietors cannot attract trained employees due to the limited opportunity for career advancement. Therefore, sole proprietorship is not suitable for large scale operations. Means ड्यू टू फाइनेंशियल एंड लिमिटेड मैनेजरियल रिसोर्सेज लिमिटेड, इसका एक्सपेंशन लिमिटेड है, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। जो ट्रेंड एक्सपर्ट बंदे होते हैं वो आना नहीं चाहते क्योंकि इसमें उसकी ग्रोथ नहीं दिखती उसको, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं है, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, एक्सपेरेंट्स को। सो इट कैन नॉट अट्रैक्ट ट्रेंड एम्प्लॉइज ड्यू टू लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है फॉर कैरियर्स एडवांसमेंट, कैरियर की जो है ग्रोथ की लिमिटेड है। ओके, देयरफॉर सोल प्रोप्राइटर इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। लार्ज स्केल ऑपरेशन में सोल प्रोप्राइटरी जो है सुटेबल नहीं है। ओके ओके।